best and most scary things about relationships is that they don't come with an expiry date. You never know when they need servicing or a maintenance check till one day you end up saying or hearing, listen babe, we need to talk. This radio's new BFF Karan Johar on Ishq 104.8, India's only romantic radio station, and this is the place where I try to talk and listen to you about love, life and its related issues. Now today I'm taking up one very exciting topic, which is boredom. See what I did there? तो boredom सबके साथ होता है, depending on how much we work on ourselves and the relationship. किसी को like किया, फिर love किया, फिर शादी वगैरह वगैरह etc etc. But there always comes a point where you think that what now यार क्या करूँ, हो गया सब कुछ. Well, right now it's the time for calling Karan on Ishq 104.8, where you can tell me what's becoming boring in your story. Must I hang on or simply move on? This is the decision that seldom makes or breaks hearts, and that's what we're all talking about today. You're back with radio's new BFF Karan Johar on India's first love song station Ishq 104.8, and here we are trying to have a very interesting conversation on love and boredom. I guess people in this country are really bored. At least that's what I'm gathering up sabke messages padh ke. So let's get right to a caller, shall we? Who's calling me? Who's calling Karan? Hello. Hello. This is me, Karan. Who am I speaking with? Hi Karan, this is Tanvi and I'm from Delhi. Tanvi, hi. How are you doing, Tanvi? Hi, I'm good. How are you? I'm good. I'm happy to talk to you. What's happening in your life? With my life, it's pretty dull these days. So the scene is that I've been in a committed relationship for past 8 years, and it's like I've grown up with this person, and I know him in and out, and he knows everything about me. And Karan, the problem is, I miss being single sometimes. I miss the activities that single people do. मेरे सारे friends, उनको कितना freedom है सब कुछ करने का, but sometimes I feel I'm missing out. मतलब, you're getting now what I'm trying to say. No, I totally get it, because you're going through what you call relationship fatigue. Yeah, true. It happens to many people who've been in long-term relationships. Sometimes it happens in marriages, many a time in marriages actually, but also in long-term relationships. And you've been in a relationship for 8 years. You've probably had just physical contact with this one boy in those 8 years. You've not, felt the excitement and pang of new energies. You feel like you're not going through the same fun and experience. And you're, in any case, going through what I said was relationship fatigue. So you're feeling all those things. But have you ever thought that maybe he's feeling it too? No, we haven't talked about it at all. The thing is now, it is going so stagnant that we feel indifferent about each other. Okay, let me tell you, ask you actually, on a scale of 1 to 10, what is your level of emotion or love for this boy? Give me a number. It is very high. Right now, I would say it's around 8. 8, you feel that much love for him. Can you imagine life without him? Like suppose he broke up with you today and he was not in your life. What do you think your feeling would be then? Obviously, I will feel lonely. Whenever I'm going out, I text him, I'm going here. Whenever I'm home, I text him, I'm back. So if I'll be single, I wouldn't be answerable to anybody. Nobody will wait up for me. I don't know what it is to be single. I think you need to, take a step back to assess where your feelings are, because I'm not sure you are really in control of them right now. I think that you may not realize this, but you may have also perhaps taken a step back emotionally, and you're right now holding on to him because he's your habit, he's not your love. And that's never a place to be in a relationship, because you've got to constantly reinvent your emotions. You need to reinvent yourself to understand where you really feel for him. Are you holding on to him because he's your message, he's your habit, he's your call, or he's your definite intense love? You need to figure that out for yourself, because I have a feeling that you're a little over him. No, I'll tell you one thing. What I'm feeling right now is we have done so much together that he has become my habit. You feel like you need new experiences because you're missing that, right? Yeah, kind of. And this is a classic catch-22, let me tell you, because if you really have that experience, that amounts to infidelity, and if you continue like this, that amounts to boredom. So, I think you need to have a chat with him. I think you both need to sit and have a one-on-one conversation, because I think something is amiss in this relationship right now. I think you are taking each other for granted. You need to bring that spark back if you want to hold on to this at all. If you don't want to hold on to this at all, you'll know that will also, life will give you enough signals. But for right now, I think you need to reinvent your love life. You're sounding like a bored old couple who are sitting and watching television because you all can't move your limbs. Now that is not a way to be in love. Shape up or ship out. So I think there are two things. Have a chat
and be my option B, and actually that's my option A to you, is to take some time off. You need a month apart. Okay. So if I go with option B, I don't have to feel guilty about doing anything, right? I can do whatever I feel like. I can do what my single friends are doing and not feel bad about it कि I'm in a committed relationship. I mean, there's no rule book, and you don't need to tell him that. I'm just telling you that advice on the side. Do what you want in that month, because, go feel that feeling of being single. Go enjoy it. See if you really like it. And give him that same leverage as well. Tell him for a month, let's not meet, let's not talk, let's just try to find ourselves. Don't have to necessarily tell each other that you might have other encounters with other people, that you don't need to give so much explicit detail to each other, because that lands up making people very hurt and upset. Do whatever you want. Swipe right. Exactly. And telling you, try that, take some time off, and thank you for calling, Karan. Okay, thank you so much. All right, take care. Bye. Yeah, bye. Okay, so I once read in a survey, 71% of men who cheat do so because they're bored. And the same is true for 49% of women. Wow, those are some appalling numbers. Hi, you're with Karan Johar on the show, Calling Karan on Ish 104.8. We're having a very interesting conversation on boredom. Yeah, if you could believe that. Boredom. I don't know about a little something about boredom in relationships. Like, when I first started, that was my big problem in my first relationship. I was bored, because after a point, like, the love and lust goes out of the window, and then the conversation takes over. And when the conversation is repetitive and about the same things and about overtly intellectual, intelligent, and blah, 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 those things are great. But, you need other forms of stimulation. Sometimes just being teasy, being dramatic, being melodramatic, all that is fun, yeah. I mean, I love all the drama. That's why I make the movies I do. Anyway, seeing boredom as a problem is a problem, guys. You're with radio's new BFF, Karan Johar on Ish 104.8. Here on radio for the first time, we're talking about boredom today, and one thing we need to accept is that boredom is a natural phenomenon, and it doesn't have a one-time permanent solution. You have to try to spice things up in the relationship all the time to keep yourself and your partner interested. On that note, let's hear a not-so-boring query on boredom. Who's calling me? Who's calling Karan? Hello? हेलो करण, आप आवाज नहीं सुन पा रहे मेरी? मैं क्या? आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? मैं बुरी तरह आ रही है आपकी आवाज. मैं सुनाई दे रहा हूँ आपको? यस क्लियरली ऑडिबल है आप. मैं ऑडिबल ही होता हूँ नॉर्मली. मैं एडिबल भी होता हूँ कभी कभी. क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अर्जुन है. अर्जुन. तो मैं करण हूँ. ऑलरेडी हमारी मिलन हो गई है. अरे वाह. हाँ. क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में अर्जुन? प्रॉब्लम बस ये है कि 1 साल हो गया है मैरिज, अरेंज मैरिज. ओहो, अच्छा. एंड बस सिचुएशन थोड़ी ये हो गई है कि मैं टोटली एक्सट्रोवर्ट हूँ, एंड जो मेरी वाइफ है जो वो इंट्रोवर्ट है, शाय है, वो कम बात करती हैं. सो इट्स लाइक 1 साल से ये दिक्कत आ रही है कि मैं बात करता हूँ उससे तो इट्स लाइक ऑल राइट, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती. तो मैं अब ऐसा लगता है कि मैं ही चप्पड़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा कम फील करता हूँ मैं. ओहो, तो ये पहले इस बात का एहसास नहीं हुआ था क्या आपको जब आप अरेंज मैरिज कर रहे थे? तो थोड़ी तो मुलाकात हुई होगी ना पहले, या ऐसे मंडप पे सीधे चले गए? तब नहीं, जब मिले थे तो इट वाज लाइक ऑल राइट, बात होती थी. तब फैमिली हमें थोड़ा बहुत जवाब दे रही है. लाइक जो थोड़ी बहुत बची हुई स्टाइल नेचर है इनका 1 साल में ठीक हो जाएगा. बट ऐसे थोड़ी कोई रेडियो थोड़ी है कि ठीक हो जाएगा. इंसान है वो तो उसकी कॉर पर्सनालिटी थी ना कि वो शाय थी, सेमी हुई थी, इंट्रोवर्टेड थी. वो तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसी उसकी पर्सनालिटी है. अब 1 साल में थोड़ी कोई ठीक हो जाता है. ठीक, उस बीमार नहीं है वो बेचारी, उसकी बस पर्सनालिटी ऐसी है और आपकी एक्सट्रोवर्टेड है. तो आप दोनों एक्सट्रीम पर्सनालिटी वाले. आप अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपकी अट्रैक्शन लेवल क्या है उनके लिए? आप बहुत अट्रैक्टेड हैं उनसे, या उस डिपार्टमेंट में भी थोड़ी बॉर्ड है आप? ना मैं अट्रैक्टेड हूँ उससे. ऑल्दो ठीक है, मुझे थोड़ी कभी कभी बोरिंग लगती है, बट मैं छोड़ना नहीं चाहता उसे. नहीं, छोड़ने की बात नहीं कर रहा था. मैं कह रहा था कि आप में वो पैशन लेवल है ना आपके रिलेशनशिप में. यस. थोड़ी गर्माहट है आपके रिश्ते में. यस. वो है ना? आप खुश है ना इस रिश्ते में? अभी थोड़ी बॉर्डम है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स में आप खुश हैं? हाँ, कह सकते हैं. किसको कह सकते हैं आप? मुझे ही तो कह रहे हैं, मुझे बता दीजिए ना. आप शर्मा क्यों रहे हैं? शर्मा क्या,
क्या बोलूँ, बस थोड़ा आदत नहीं है जल्दी एक्सप्रेस करने का। नहीं, देखिए ये शो है, एक्सप्रेशन वाला शो है, तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, तो इसलिए मैं आपके प्रॉब्लम्स फिर सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप थोड़े सहमे हुए हैं इसीलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि वो थोड़ी सहमी हुई है और वो थोड़ी इंट्रोवर्टेड है, ज्यादा आप बात करते हो। तो अगर आप अट्रैक्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप नॉट बिकॉज की शादी है, मैंने शादी कर ली है, माँ बाप ये कहेंगे, भाई बहन ये कहेंगे, इट्स बिकॉज यू हैव टू जेन्युइनली बी इंटरेस्टेड, देन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है कि रिश्ते जितना आप अपने प्रोजेक्ट या काम पे मेहनत करते हैं ना, उसी किस्म की मेहनत आपको अपने रिश्ते में भी डालना चाहिए। यू हैव टू देन टेल हर कि देखो क्या ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ और तुम्हें अच्छा क्या लगता है, उसकी इंटरेस्ट जान लो। लॉट्स ऑफ टाइम्स ना मेन इन मैरिजेस दे डोंट वांट टू नो व्हाट देयर वाइव्स रियली लव, व्हाट दे नीड, व्हाट दे डिजायर। उनकी उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी चाहत क्या है, उसे क्या पसंद आ जाता है। चाहे उसको इस किस्म की चीजें अच्छी लगती हैं, इस किस्म की मूवीज अच्छी लगती हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं, उसके बारे में आप थोड़ा और जान लो। मुझे लग रहा है कि आप बस खुद के बारे में सोच रहे हो, अपनी फीलिंग्स क्या है, अपने मेरे इमोशंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा और जान लो। जब भी लोग बहुत क्वाइट होती है ना, चाहे वो मर्द हो या औरत, उस साइलेंस के पीछे एक कहानी होती है। वो कहानी आप जान लो, वो क्या है कि इस वजह से वो थोड़ी इंट्रोवर्टेड है, थोड़ी अपने आप में रहती है। वो क्या है, वो क्यों है, बचपन में क्या हुआ था, माँ बाप के साथ उसका कैसा रिश्ता था। कॉन्वर्सेशन आप आगे बढ़ा, बहुत सारे सवाल आप पूछो, आप उसकी थेरेपिस्ट बन जाओ। आप उसको और जानोगे और उस हिसाब से वो और खुल जाएगी एज अ पर्सनैलिटी, और फिर आपको फिर से मोहब्बत हो जाएगी। ये प्लान कैसे रहा, अपनी बीवी को जानने का प्लान। तो आज रात को जब आप घर जाएं, लौट जाएं, तो उनको डिनर के लिए बाहर ले जाएं और एक 20 क्वेश्चनर प्रिपेयर करें अपने माइंड में और उनसे पूछिए बचपन उनका कैसे गुजरा, किस स्कूल में गई थी, किस किस्म के फ्रेंड्स थे, उसका रिश्ता कैसे था अपने भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, क्या था जिस वजह से वो किसी से डरती थी या किसी से अकड़ती थी, कोई ऐसा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाती, शायद आपको बता दे। उसको जान लो, उसको पहचान लो, उसके बाद इस रिश्ते को निभा लो। हाँ, पर्सनल। मैंने कभी ऐसा सोचा था नहीं, मतलब अज्यूम कर लीजिए पहले से। नहीं, कुछ अज्यूम नहीं कर सकते आप, आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़े अपने बारे में कम सोचिएगा, उसके बारे में बहुत ज्यादा, और फिर देख लीजिए आपको सब साफ नजर आने लगेगा। ठीक है? All right then, I wish you well. Thank you. Happy marriage, stay happy. Thank you. Bye. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहते हैं, बट वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इन अ रिलेशनशिप इज व्हेन यू नो यू आर बोर्ड बट डू नथिंग अबाउट इट। बॉर्डम के इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए बॉर्डम को पहले एक्नॉलेज करना पड़ता है यार। You must tell your partner if you feel the spark fizzling. Is it the sex that's predictable? Are their jokes repetitive? Or is that you go to the same old places for the same dates? Whatever it is, analyze it and tell your partner, discuss it, talk about it, because only then will you be able to work on it. Speaking of communication, I've just received a voice note from a friend who is great at communication. Let me play it for you. Surprise caller of the day. Karan, you're doing this also. मतलब यही रह गया था बस, है ना? You become a radio jockey also. You've been a director, producer, actor, TV show host. Then you have been a fashion designer, jewelry designer. Now, you've been a judge also on TV shows, and now you have become a radio jockey also. I don't know what's left. I think at the end of your lifetime, you're going to cover every profession that has ever existed in the world. More power to you. If you haven't already figured it